students. Just give me 2 minutes. We're going to start. So we had already discussed air and noise pollution and also radioactive pollution in last class. Now what we're going to discuss is water, thermal and soil pollution. अच्छा तू कल आई थी क्या? तूने फोटो डाली थी मैं कल आई थी मैं चली गई थी तो उसने कहा तेरे कहां से आई? हां मुझे पता चला तूने फनल को ऐसे कर दिया और कर दी हां कोई बात नहीं और बहुत काम किया तो मैंने तुझे मैं तो मैं सोच रही थी कि इसने खुद से सेल्फी लेने कोरोना को भेज दिया कोरोना ने स्क्रिप्ट डाला थर्मल एंड सॉइल pollution कैसा रहा वो उसकी क्लास चल रही है पार्टी वाटर, थर्मल एंड सॉइल पोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे। बहुत मजे कर रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन को के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो डिफरेंट बेसिस पे, डिफरेंट कैटेगरीज के बेस पे डिफरेंट तरीके से वाटर पोल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन वाटर बॉडीज। बेस्ड ऑन वाटर बॉडीज, तो किस तरह की वाटर बॉडी है उसके हिसाब से पोल्यूशन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या पार्ट्स आएंगे। इसमें पहला आएगा सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर मतलब जो जैसे रिवर, लेक्स के अंदर जो वाटर होता है, सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन किसमें होगा? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में। ठीक है, फिर है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके अंदर होने वाले पोल्यूशन को ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ओशंस भी ले सकते हो। रिवर्स जो सरफेस वाटर है, ओशंस या सी जो होगा वो भी इसी में आएगा, सरफेस वाटर पोल्यूशन। तो दो कैटेगरी हो गई आपकी बेस्ड ऑन वाटर बॉडीज की, सरफेस वाटर में हो रहा है या ग्राउंड वाटर में हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स। पोल्यूशन का सोर्स क्या है? बेस्ड ऑन सोर्स। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन? अब दो तरह के पोल्यूशन होते हैं बेस्ड ऑन सोर्स। एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो अगर पोल्यूटेंट्स एक पर्टिकुलर स्पॉट से डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई इंडस्ट्री है या कोई पाइप है, ठीक है, या कोई टैंकर स्पिल हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है, तो वो हो गया पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो एग्जांपल इसके जैसे आप लिख सकते हो फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ड्रेन्स, टैंकर्स, मतलब जैसे ऑयल टैंकर्स स्पिल हो जाते हैं ओशंस के अंदर। ठीक है, ये सब पॉइंट सोर्स में आ जाएगा। फिर है नॉन पॉइंट सोर्स। तो नॉन पॉइंट सोर्स में तो बहुत सारे ऐसे जहाँ पे द सोर्स इज स्प्रेड आउट बेसिकली। ठीक है, अलग अलग जगह पे डिफरेंट जगहों से पोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर। जैसे हमारे ये रिवर यमुना के अंदर जो पोल्यूशन है ओवरऑल, नॉन पॉइंट सोर्सेज बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह पे डिस्चार्ज हो रहा है बहुत सारा। ठीक है, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स हो गए। फिर है बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि पोल्यूशन किस टाइप का है। तीसरा बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे
वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है? बेसिकली हार्ड वाटर है, यानी खारा पानी जिसे कहते हैं हार्ड वाटर, द वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। तो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, उसके बेसिस पे पोल्यूशन को डिवाइड किया जा सकता है। अब चौथा है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है वो क्या है? डोमेस्टिक सोर्स है, यानी कि घर से निकल रहा है पोल्यूशन, ठीक है। जैसे अप्रोक्सीमेटली 33% जो है वाटर पोल्यूशन वो डोमेस्टिक होता है। 33% ऑफ टोटल वाटर पोल्यूशन इज डोमेस्टिक, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक है। एग्रीकल्चर यानी खेती, खेत जो होते हैं आपके फील्ड्स होती हैं या लाइफ स्टॉक्स होते हैं, उनसे होने वाला पोल्यूशन है अप्रोक्सीमेटली 29% ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज 27% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और उसके बाद अदर सोर्सेज विल बी रिमेनिंग 11%। अब अदर सोर्सेज कैन बी एनीथिंग, 11%, ठीक है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो डोमेस्टिक है जनरली ये ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। डोमेस्टिक सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। एग्रीकल्चरल पोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक होगा but not all of it will be biodegradable. For example, pesticides are not biodegradable. They are organic but they are not biodegradable. Sometimes inorganic as well. Organic inorganic दोनों होगा इसमें। इंडस्ट्रीज के अंदर मोस्टली इनऑर्गेनिक पोल्यूशन होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन होगा, मोस्टली इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। अदर सोर्सेज के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर से निकलने वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें डिटेल में थोड़ी सी, तो पेस्टिसाइड्स आर one of the major causes of water pollution in our country, ठीक है। where 27% of the total waste water is from agriculture, pesticides are one of the major concerns. So pesticides, two important aspects of pesticides are that they are non biodegradable, ठीक है। अच्छा, they undergo biomagnification। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाते हैं, प्लांट्स के अंदर जितने पेस्टिसाइड्स होंगे उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होंगे उस एनिमल में जो प्लांट को खाता है, और उस एनिमल को खाने वाला जो एनिमल होगा उसके अंदर और भी ज़्यादा पेस्टिसाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन हु इज ईटिंग मीट, चिकन और कैटल और एनी फॉर्म ऑफ मीट, मटन, तो द प्लांट which had pesticide that was eaten by some kind of cattle, ठीक है, that cattle will have a lot more pesticides than the plant had. Now when a human or any other carnivore eats that animal, it will have even more pesticides. So the concentration of a toxic substance keeps increasing as we go up in a food chain. जैसे जैसे food chain में हम ऊपर जाते हैं, toxic सब्सटेंसेस जैसे कि पेस्टिसाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इनके अंदर एक चीज़ और होती है, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक ही ट्रॉफिक लेवल में प्लांट के अंदर धीरे धीरे ये इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम प्लांट्स खा रहे हैं या एनिमल्स खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स ना हमारे फैट टिश्यूज के अंदर इकट्ठे होते हैं एंड दे डू नॉट डिग्रेड। ऐसा नहीं है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में चला गया और फिर थोड़े टाइम में वो रिलीज हो जाएगा।
वो खत्म हो जाएगा और नया आ जाएगा। जो पहले गया था, जो 10 साल पहले था, वो भी रहेगा बॉडी के अंदर और ऐड होता रहेगा। इसी प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो पेस्टिसाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में बढ़ती ही रहती है। इसीलिए अब एडवाइस किया जाता है कि जो भी आप वेजिटेबल्स खाते हो या जो भी प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हो, वॉश इट प्रॉपर्ली, ठीक है, सो दैट द पेस्टिसाइड स्टिकिंग टू इट एटलीस्ट डजंट गो इनटू योर बॉडी। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं, वहाँ तो बचना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि वो धोने से साफ नहीं होगा, दैट इज इनसाइड द मीट itself, so that you cannot avoid. But eating vegetables, you can avoid pesticides to certain extent, not completely. Obviously it is also into the vegetables as well, but the pesticides sticking to the surface can be avoided. अब पेस्टिसाइड्स जो हैं बेसिकली 3 कैटेगरी में आते हैं। देयर आर 3 बेसिकल 4 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, 4 टाइप्स के हैं पेस्टिसाइड्स। पहले हैं ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रीफली इनके बारे में बता देता हूँ आपको। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, मेन पेस्टिसाइड्स की 3 कैटेगरी है। जो 4th कैटेगरी है वो बेसिकली बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं। इंसेक्टिसाइड्स, तो मेन ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन्स के अंदर वन ऑफ द मेजर एग्जांपल इज डीडीटी। डीडीटी का आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है, मिथॉक्सीक्लोर और ये सब, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर आ जाएगा सारिन, ट्यूबन। तो इसके अंदर बेसिकली हम पहले बात करेंगे कि क्या सब्सटेंस है जो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, उसका सोर्सेज क्या है, कहाँ से रिलीज होता है और उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्सटेंस सबसे पहले देख लेते हैं हम एंटीमनी। SB इसका सिंबल होता है, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल एंटीमनी का ही है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में रिलीज होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है सेमीकंडक्टर्स में, बेसिकली जो आपकी कंप्यूटर्स की चिप होती है ना, उसके अंदर आप सिंपल वर्ड्स में कर सकते हो, ठीक है। एम्यूनिशन के अंदर यूज होता है, यानी बॉम्ब्स जो बनाते हैं उसके अंदर होता है। तो बेसिकली लार्ज डोज के अंदर अगर मिलेगा तो लार्ज डोजेस कॉज पॉइजनिंग और स्टमक अल्सर्स कॉज कर सकता है, हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है। इसके अलावा मर्क्यूरी वन ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स इन वाटर, और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसका Hg इसका सिंबल होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर रिलीज हो सकता है, डेंटल फिलिंग्स में हो सकता है, फंजिसाइड्स में हो सकता है, फंगस को मारने के लिए प्लांट्स पे स्प्रे किया जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग इक्विपमेंट्स, वायर्स को जोड़ने के लिए जो सोल्डरिंग इक्विपमेंट्स यूज किए जाते, सोल्डरिंग जो यूज की जाती है 2 सर्किट बोर्ड्स के अंदर स्मॉल वायर्स को वेल्ड करने के लिए, ठीक है। तो मर्क्यूरी के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके ऊपर?
डैमेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर आपकी बॉडी में आपने खा लिया, किसी तरीके से इंजेस्ट हो गया, आपकी बॉडी में चला गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन को डैमेज करता है। कॉजेज न्यूरोपैथी, ये एक डिजीज होती है न्यूरोपैथी। यू कैन सर्च सिम्टम्स, कैसे इफेक्ट करती है ह्यूमंस को। तो दिस इज व्हाट इज कॉज्ड बाय मर्क्यूरी। मिनेमाटा डिजीज के नाम से एक डिजीज है। मिनेमाटा बेसिकली जापान में एक बे है, बे ऑफ मिनेमाटा बे इन जापान। ये उसी के नाम से इसका नाम रखा गया था, मिनेमाटा इन जापान 1953 में। तो मिनेमाटा डिजीज ही बोल दिया जाता है उसको, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। आर्सेनिक, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स के नाम लिखवा रहा हूँ मैं आपको। AS इज द सिंबल, एंड आर्सेनिक ऑक्साइड भी AS2O3। तो ये बेसिकली सिरामिक्स के अंदर होता है रिलीज, ठीक है। सम मेडिसिन्स कंटेन आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, फायरवर्क्स, all of these contains arsenic। आर्सेनिक जो है बेसिकली, अगर 70 mg इज लीथल, अगर 70 मिलीग्राम भी इंजेस्ट कर लिया, बॉडी में चला गया, तो इंसान मर सकता है इससे, ठीक है। ब्लैक फुट डिजीज कॉज करता है। वेस्ट बंगाल के जो वेस्ट बंगाल में जो ग्राउंड वाटर है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्सेनिक कंटामिनेशन है, तो वहाँ पे ब्लैक फुट डिजीज बहुत कॉमन है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब तो फिर भी कंट्रोल कर लिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि वाटर रेगुलरली टेस्ट होता है, और जहाँ पे ज़्यादा आर्सेनिक होता है वहाँ बैन कर देते हैं उसे पीना या ट्रीट कर देते हैं। बट अर्लियर इट वाज वेरी कॉमन। लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर इट कैन कॉज, ठीक है, जैसे कि स्किन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है। कैंसर इन स्किन, ब्लैडर, lungs are most common। इसके बाद अगर देखें तो कैडमियम is another metal again, CD is the symbol, ठीक है। तो ये बेसिकली निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं, कैडमियम बैटरीज, उनसे रिलीज होता है, ठीक है। बहुत सारे मेटालिक अलॉयज का पार्ट होता है कैडमियम। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं कैडमियम की, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलीज हो सकता है। टायर्स में होता है, ठीक है। उसके अलावा किडनी एंड इंटेस्टाइनल डैमेज कैन कॉज। Give me a moment।
Aryan, no, I haven't taught Unit 1. There will be an extra class for Unit 1. I hope the voice is clear now. Can someone please type a message if I'm audible? And if you can see the Q&A screen, I'll share the writing screen in a minute. Can please someone type a message? You can hear me? Okay, perfect. Yeah, so the disease caused by cadmium, one of the most important diseases that generally is in your exam, is called Itai disease. Okay, basically cadmium causes weakness in your bones. Itai means ouch, ouch, basically. So the person's bones become very, very weak. Okay, even on touching, he will feel a lot of pain. That is why it is called Itai. That is ouch, ouch disease. Some other metals that causes problems are chromium, Cr, leather tanning. It is used in leather tanning. Okay. Magnetic tapes, although these are not used anymore. Pigments, colored pigments, basically any kind of colored pigments. Photography. Now it is not used in photography anymore because the photography is all digital now. Although human body needs a small amount of trivalent chromium, there are two types of chromium, basically Cr3 plus and Cr6 plus. 3 plus is called trivalent chromium. This our body needs to a certain extent, in a small amount. This does not. This is poisonous. Chromium 6 plus. Okay. So hexavalent chromium जो है basically 6 plus Cr6 plus is poisonous. Stomach ulcers causes basically stomach need not all kinds of gastrointestinal ulcers. यानी कि your entire intestines and stomach can develop ulcers if excess of Cr6 plus is in your body. Gastrointestinal ulcers. Dermatitis causes swelling in skin basically. Lung cancer. क्या बोलो? Lung cancer. Liver damage. Some other metals are lead. So lead was found in Maggi. A few years ago, I don't know if you guys remember or not. Maggi was banned for some time. So what they found was it had contained excess lead that was poisonous. So Maggi still contains some lead, but lead is not enough for poisoning. But at a particular point of time, Maggi contained some excess amount of lead. That is why it was banned temporarily. तो इसके सोर्सेज नॉर्मली क्या हैं, कहाँ से लेड निकलता है? प्लास्टिक्स, सिरामिक्स, ग्लासवेयर, पेंट्स, pigments, batteries are one of the major sources of lead. All your car batteries currently, car and these bike and car batteries, all kinds of batteries that are used in your inverters at home are all lead storage batteries. ठीक है?
पेट्रोल के अंदर हालांकि अनलेडेड पेट्रोल अब यूज़ किया जाता है, बट अर्लियर इट वाज आल्सो यूज्ड इन पेट्रोल एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। वो बाद की बात है कैसे क्या होता है एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके ब्लड में, इजीली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ठीक है, अफेक्ट्स लिवर, किडनीज, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन डैमेज कॉज करता है यंग चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, कैन कॉज कॉमा, टॉक्सिक, even death to some extent. Nickel is another metal that is poisonous, a water pollutant. ठीक है, स्टील इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। बेसिकली स्टील इज आयरन मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, तो स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, बैटरीज में अगेन ये भी यूज होता है, निकल कैडमियम बैटरीज के अंदर यूज होता है। वेल्डिंग में यूज होता है, रॉड्स को वेल्ड करने में। पिगमेंट्स और पेंट्स में, पेंट्स के अंदर बहुत सारे हैवी मेटल होते हैं। बेसिकली पिगमेंट्स और पेंट्स के अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर बनाने में आस्थमा लाइक सिम्टम्स कॉज करता है, आस्थमा लाइक। I'm really sorry, the internet connection is very poor today. There's some problem. It's getting disconnected over and over. Yes. Some other metals that are water pollutants are beryllium. The symbol is Be. So it is used in many defense and aerospace industries, X-ray detection. Aerospace industries. X-rays. X-ray detection. Variety of manufacture of computer equipments. There is a disease called chronic beryllium disease. If we ingest too much of beryllium, it can cause a disease called chronic beryllium disease. BDS, sorry, CBD. CBD.
chronic beryllium disease. Sometimes it causes blueness of hands and feet. Can cause DNA damage. Pneumonia. Two other metals are aluminium and manganese. About these you can read in detail later. These are not that poisonous in a small doses. Aluminium symbol is Al, manganese is Mn. So what are the global impacts of water pollution? The first one is eutrophication. So what is eutrophication? In simple words, eutrophication is basically enrichment of freshwater bodies by accumulation of waste, organic waste of nitrates, phosphates, basically organic enrichment nitrates and phosphates, sorry, not organic waste only, nitrates and phosphates ultimately causing the death of all life forms. Yeah, ultimately causing the water body to convert into a swamp. तो बेसिकली होता क्या है, अगर एंथ्रोपोजेनिक सराउंडिंग एक्टिविटी के अंदर की वजह से ह्यूमंस वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा वेस्ट डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की कंसंट्रेशन लेक के अंदर बढ़ रही है। तो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन की बढ़ने की वजह से उसके अंदर एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेगा, एंड दैट एल्गी विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन दैट लेक. Now, when that algae will consume all the oxygen, there will be no oxygen left for the animals living there. So those animals will die, and their dead bodies will contribute to even more nitrates and phosphates. So eventually that lake will be so much filled with the dead organic matter that it will convert into a swamp. So that is this process. The oxygen level basically. How does eutrophication start? Dissolved oxygen level in the lake starts to drop. A lake or a river or whatever, basically any fresh water body will slowly convert into a swamp, and its dissolved oxygen level will completely disappear. Okay. I've already discussed bioaccumulation and biomagnification, so I will not go into the details of that. So global impacts of water pollution is eutrophication. There are several diseases that are caused by this water pollution. Okay. So there are diseases caused by water pollution. So what are the two most common diseases that are caused by water pollution?
amoebiasis. Okay, so basically abdominal disease. It causes discomfort in your abdomen, tiredness, loss of weight, diarrhea, distension. Second, cryptosporidiosis. It's a flu-like disease basically. Causes diarrhea, loss of hunger, and distension. Rhiniasis. So it's intestinal disturbance again. It causes most of the water-based diseases are damaging your abdominal system. Okay, ascariasis. This also damages your nervous system. Ascariasis. Botulism. Okay, it causes blurred vision, dehydration, difficulty in swallowing, slurred speech, vomiting, diarrhea, difficulty in breathing, dysentery. Again, gastrointestinal tract is damaged in this case. Escherichia coli infection, E. coli infections, and all of that. Cholera, typhoid. So these are some of the most common diseases that are caused by virus. Abhi, for example, the current disease, the coronavirus, basically, SARS, SARS virus, it is also called. It also spreads through water. It can also spread through water. SARS is coronavirus. Now there are several methods of measuring water pollution. How do we measure water pollution? So a few criteria to measure water pollution is biological oxygen demand. Biological oxygen demand is basically how much oxygen microbes require to degrade all the biological matter in a water body. एक वाटर बॉडी में जितना बायोलॉजिकल मैटर है उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे आप बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड should not be more than 6 mg per liter. ठीक है, for should be less than 6 mg per liter for drinking water. ठीक है, जो हमारा पीने का पानी है that is considered healthy only if its biological oxygen demand is less than 6 mg per liter. ठीक है, there is another criteria that which is called chemical oxygen demand. Biological oxygen demand is also abbreviated as BOD. Chemical oxygen demand is abbreviated as COD. So chemical oxygen demand is a chemical oxidizing agent. How much oxygen will a chemical oxidizing agent require to degrade all the matter, all the oxidizable compounds in the water. वाटर के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको कंप्लीट ऑक्सीडाइज यानी खत्म करने के लिए एक केमिकल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे बोलते हैं
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसकी कोई एज सच लिमिट एग्जैक्टली सेट नहीं है बाय WHO, ठीक है, बट इट शुड आल्सो बी बिलो 50 mg per liter. ये by the way this was set by WHO BOD. This is not clear which मतलब this is I am telling you on the basis of experience what kind of water is considered healthy. Anything above 50 mg per liter will be too dangerous to drink. So basically in India the drinking water quality is governed by Bureau of Indian Standards. Bureau of Indian Standards, BIS. So BIS have set certain limits for important parameters of water. ठीक है. So what are the different parameters that are measured? Total dissolved solids. They should be between 500 to 2000. 500 should be the acceptable limit, but in the absence of alternate source, if it is not available, अगर मजबूरी है तो 2000 mg per liter तक acceptable, ठीक है. Unit is milligram per liter in both cases. Total dissolved solids, जिसे हम शॉर्ट में TDS बोलते हैं, ये इतना होना चाहिए वाटर के अंदर. कलर हेजन यूनिट्स में मेजर किया जाता है. 5 हेजन यूनिट से कम होना चाहिए. वाटर कलर्ड नहीं होना चाहिए बिकॉज कलर इंडिकेट देयर इज सम प्रॉब्लम विद वाटर. और मैक्सिमम 15 हो सकता है, ठीक है. टर्बिडिटी should be 1 and 5. Unit is same, mg per liter. Sorry, NTU. The unit is NTU, nephelometric turbidity unit. ठीक है. Total hardness is another parameter that we use. So total hardness should be 200 mg per liter या फिर 600 mg per liter in the case of absence of another source, ठीक है. You don't have to memorize these limits, but I am just going to tell you from now. I'm not going to write the limits. I am just going to tell you what are the different parameters they measure. So they measure ammonia, they measure chlorine, they measure pH, chloride, fluoride, ये वो पेज नहीं है जो मैं वो कर रहा था, बट ये भी मोटा है. arsenic, कैलिफोर्निया डू समथिंग का कुछ था. बहुत एक माइनर सी लेयर है, बट ये मोस्टली तेरा nitrate, यही तेरा पूरा 95% है ना. तो ये 1 सल्फेट, वन साइडेड सैंडी है पूरा का पूरा. सेलेनियम, इसको बिल्कुल हिलाना मत. एक्चुअली ना ये जो थोड़ा सा ब्राउन जिंक, मर्क्यूरी. हाँ, वो उसका होगा ना. सबसे ऊपर क्या आता है? सिल्क आता है. सबसे ऊपर क्लियर आता है. lead, cyanide, copper. क्ले का होगा तो इसमें ना के बराबर ही है. देख तू रिवर्स सैंड लेगा तो 100% वो सैंड ही होगा. रिवराइज में मिलता नहीं. सिल्ट हो सकता था, बट क्ले तो होने का चांस बहुत कम है. राइट. बट इसको रख कल तक के लिए चलाएगी तो तेरे को क्लियर हो जाएगा. कॉपर. ये तेरा सैंड है मतलब, क्योंकि 95% से ज्यादा कॉलम तो सैंड ही है. क्रोमियम, टेबल दे रखा है ना वो वाले. निकल. इसको सैंडी लोम या क्ले सैंडी होने के लिए कम से कम 80-85% और 15% कुछ और होना पड़ेगा, तभी दूसरे उसमें जाता है. तब तक सैंडी उसमें माना जाता है. तो ये सारे सैंडी. So these are the different parameters that Bureau of Indian Standard is monitoring to ensure water quality. बहुत ज्यादा फाइनल रेजोल्यूशन करने के लिए ये मैं स्वागतम नाम वाला जो स्टूडेंट हमारा आता हुआ था, उसमें ये सैंड लेकर से फिल्टर करने की बात कर सकता
I'm going to take a few questions now. ये तो एक सैंड है, देख सैंड के लिए देखो रिवराइज सैंड का क्या होता है ना, रिवराइज सैंड ना शाइन करती है, इसको लाइटिंग करेंगे ना, हाँ ये सारा का सारा ना शाइन करता है, तो मतलब इसमें सैंडी कंपोनेंट है, और ऐसे जमने के बाद अगर क्रैक आ रहा है ना ऊपर, कहीं पे क्रैक आ रहा है या इस तरीके का टेक्सचर मतलब You don't have to remember Yutika Shabra. You don't have to remember the name of the pathogen. You can only memorize the disease and its symptoms. That is enough. And the cause of that disease. That will be enough. You don't have to remember the scientific name of that animal. If you can, that is good. But if you can't, it's okay. Nobody is expecting you to write the scientific names. Kushi, I will send you the link. I'm sorry, I was busy. I was not able to do that. बिल्कुल टेलीकॉम पाउडर होता है, जो सिल्ट होती है बिल्कुल टेलीकॉम पाउडर है, तो सैंड होगा वो कोर्स और शाइनिंग होगा, क्ले वाले का तो Yeah, I have already answered this question. I have not taught environmental, the first unit of this syllabus, which is which was Introduction to Environmental Science. I will take an extra class for that. Does anyone have any other question? I will explain that. Aryan, please keep attending all the classes after the syllabus is done. In the last 3 classes, I will discuss question papers in which you will know what is important with respect to your exams. I will go through the entire syllabus and also discuss some question papers with you. Gomit, I think date sheet has been released already. You can go check the SOL website, and I am not sure about the format, whether it will be online or offline. Kindly read the instructions. Must be on the website only. I haven't read it properly, but I am sure the rate sheet is out. Someone, if you're in the WhatsApp group, someone should ask them. Someone will send you there, or you can go through the SOL website. The rate sheet is out already. For extra, you can buy Iraq Barucha. But I don't think you need to buy an extra book. I will share the notes right here. Keep attending the classes. Kindly do not miss the classes. If you want to buy an extra book, you can buy Iraq Barucha, but I'll also share certain books with you. I have already shared first part of the part which I have taught, and the remaining I will share by the end of this session. Not today, I mean in the next 1 or 2 weeks. Is there any other question?